Good evening and welcome to this special episode or the special program Nationwide at 6, which we are bringing to you from the banks of the Yamuna River here in the national capital. So far, for many years you have only heard the fighting about pollution in Yamuna, but today the way Yamuna River is flowing here, it's actually very, very scary. I'm standing on top of a house. My colleague Ritvik will show you. This is some of the houses here in the Yamuna Bazaar area. I'm on the balcony of one of the houses. This is the second floor, and under where I'm standing, at least a floor and a half is submerged underwater. The flow of the Yamuna River continuously has been extremely scary. And in this special broadcast today, we are going to talk about the flood situation, not just in Delhi, but in the plains in Punjab and also in the hills of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. Let me very quickly give you some context. This is the Yamuna River flowing behind me. If you would have gone about 200 meters from where I'm standing on the ground, this is a ghat. You would have seen a flat surface, all cemented, and then you would have seen some stairs. Ritvik will just show you. That's you'll see the metro, in fact, crossing on the other side as well. And the flow of the water here is absolutely scary. This entire area has been evacuated from the people because the NDRF thinks that the water level could go up. The water level of the Yamuna is over 207 meters. 208.3 meters was the maximum which was recorded in 2023. The expectation is it is going to breach that. It's still drizzling a bit, not as heavy as it was the rain a couple of hours back. I will also show you, you will see the top of a temple there. Just the last couple of feet of a full temple, which you would see behind me at this moment, completely submerged as we speak. And, behind that, it's such a, image that at this moment, that the metro crossing behind that on that bridge and just the temple in front. We may have, in fact, gotten the metros, but the waterproofing of the cities, should this area where people have been living for so many years even been allowed. That's the iron pull, the Loha pull, which is known as here in Delhi. And you would see how the water level of Yamuna is dangerously close to the surface as far as the Loha bridge is concerned. This entire area at this moment is submerged underwater, and the flow of the river is actually quite scary. And, what I can see, these clouds overhead, this is going to get very, very precarious here. Hundreds of people, if you just come this side, I will just turn around. People have been asked to vacate their houses. So you can see they just left because the situation was getting so dangerous. Clothes left hanging here on this stand as well. Now what I'm trying to do, I'm trying to make my way back, and I'll show you where the wall is and where all of this, in fact, to give you a sense of how the low-lying areas in Delhi are at this moment inundated. Houses have been locked. People, even these structures are quite dangerous at this moment. We've been told that there could be problems as far as these roofs are concerned. And just to give you a sense, on any other day, I could have just walked these stairs and gone down. You will see an AC outdoor unit as well. So there are at least floor and a half under the water where we are standing at this moment. And if we keep going in front, people's houses, आप भाई साहब यहीं हैं अभी जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, हम जाएंगे बाद में। कब? नहीं, ऐसे सबको बोला गया है निकलने के लिए, सबको खाली करा दिया गया है. चलिए, सब लोग जा रहे हैं, बांध रहे हैं, सामान बांध रहे हैं. बांध रहे हैं। बड़ा नुकसान हुआ होगा लोगों का. बहुत हाँ? बहुत नुकसान हुआ है. अब आप लोगों को भी अपना कमरा खाली करके निकलना होगा. खाली करना है। देखिए सब बाहर घूमने सिलेंडर विलेंडर अपना सामान सब लेके जाएंगे. तो अभी बढ़ेगा पानी और बढ़ेगा। लग रहा है आपको ऐसा? ऐसा ही लग रहा है, पानी बढ़ेगा। आप लोग भी निकल जाइए, सुरक्षित रहिए. Okay, so let's just keep moving, and it gives you a sense of how precarious this whole situation and these houses are. Technically, these houses shouldn't have been here because this is actually the embankment of the river Yamuna. So whenever it swells, this is actually the river flowing on the place where it's supposed to flow. This is also a small temple completely submerged that you would see just behind here. And I'll tell you,
where, I mean, the roof, the terrace of the people's houses that is exactly where you will see some boats. I will show you that as well. But for that, I will have to cross over. Now, till yesterday, when my colleagues had come here, all these areas, they were able to go down and show you the houses or the rooms which people had under this. Today, you can't go off those stairs inside because that's completely submerged. Let me just cross over, and Ritvik, be careful when you are coming. This is a wall, and I'll just help my camera person because it's a little dangerous walking here. And this is the wall. So beyond this wall, where I'm on top of the wall, where I'm standing at this moment, this is the place where no house should be. It's supposed to be where the river runs. Now all that has been submerged in the Yamuna and the flow of the Yamuna. And as I was saying, Ritvik will show you, these are the boats right on top. This is actually somebody's terrace where the boat is. And that's where the boat actually is lying at this moment. All this that you see on the other side, these were made 2 days back, thinking that the water will not cross over and people can come here and lie here, possibly, put their stuff there as well. You will also see in just a short distance there, the NDRF team going in, trying to get people out of from where they may be stuck. They may be, in fact, they are also asking people not to be around that area as well. So overall, the situation is quite grim as far as this entire area is concerned. And with more rain expected, more water coming in, it actually can become very, very dangerous for the people. Most of the people have been taking their stuff and coming out. आपका भी घर यहीं आसपास है भैया? हाँ है, डूब गया वो भी? डूब गया भैया। कहाँ पर है? कितना दूर है आपका घर? मेरा वहाँ पे है भैया। उधर है, वो भी डूबा हुआ है? हाँ, डूबा हुआ है। कितना तला डूबा हुआ है? एक आधी घर डूब गई है। आधी घर डूब गई है। तो ये हर साल ही ऐसा होता है क्या? नहीं, पिछले साल हुआ था ऐसे। 2023 में हुआ? हाँ, उसके बाद अब हुआ है? हाँ, उसके बाद अब हुआ है। तो अभी क्या बोला गया आप लोगों को, खाली होने के लिए? हाँ, खाली करवा दिया सबको। सब खाली करा दिया? पूरा सामान सारा अंदर है अभी? नहीं, कुछ निकाल लिए हैं, कुछ अंदर है। So for a lot of people here, it's going to be a very tough night. If it continues to rain the way it has been, it's only going to make situation worse for them. But throughout the day, my colleagues who are spread all across, not just in Delhi, but in Punjab, Gurpreet and Reet will be joining me from Punjab. Tanushka is joining us at this moment from the national capital. And we'll also get you ground reports from Himachal Pradesh as well. But let me first very quickly go across to my colleague Tanushka, who is with me at this moment, to try and get a sense of what the government is doing and how Delhi is preparing or reeling under the impact of this flood. Tanushka, the area that I am in is absolutely submerged. I mean, a lot of damage as far as these houses are concerned. What is the situation where you are? What's the Met department? Okay, before we do that, let's just play out this report which was sent by my colleague Anushka earlier. The water level in Yamuna has breached the danger mark, and even as we are speaking, the water level continues to increase. The current water level is measured around 206.80 meters as of 9 a.m. in the morning, and we are showing you the visuals from Yamuna Bazar from where we had reported yesterday. Today the situation is even more grim than what it was yesterday. We are showing you of houses that are completely inundated in water, and this is, we are speaking about 4-foot deep water where everything is submerged inside, and we are showing you the visuals of how the houses are currently under water. Not just this, we are seeing that compared to 2023 when the floods had inundated most of the parts of Delhi like Rajghat, Red Fort, Yamuna Bazar, etc. We are showing you the visuals of the first area from ground zero that has been completely submerged in water, and we are also showing you the visuals of how the NDRF teams have in fact started filling the sandbags so that if the water raises more, if the water crosses the 4-foot mark of this particular
particular dam, we can see that the water will start seeping into the city, and this will be a big problem for the government to tackle, because this is, how we are seeing that the tragedy that has impacted, the disaster that has impacted Himachal Pradesh and Uttarakhand is in fact right now showing in Delhi NCR, and we are seeing that the Yamuna is completely flooded and all the low-lying areas are completely submerged. This is the Yamuna Bazaar from where we are reporting. From where we're reporting on ground, and we are showing the visuals of how the situation looks like around 9 a.m. today, and the water level is in fact right now increasing as we are speaking. The water level is around 206.80, which is above the danger mark, even above the threshold of evacuation, and we are seeing that this people are being rescued from the low-lying areas. All the NDRF and SDRF teams are right now committed to rescuing anyone who is stuck inside all these areas. As I was telling you, this boat is not supposed to be here. It's the terrace of somebody's house where this boat has been parked at this moment. But to even go around, that's all that you can do. You have to use these boats to even go around. That's what the NDRF and other teams are also doing. And throughout that you would see, people are using tractors to get their stuff out. A lot of despair as well. This gentleman is trying to use his scooter to go on the other side. But if I keep moving in, this looks like a stream or a canal to you, but this is not a stream or a canal. This is actually where people live. And this is now inundated, at least a floor and a half, underwater. And that's why you also see this boat, two of them which have been kept here. Now, what is the government doing as far as this entire situation is concerned? Let me very quickly go across at this moment to Manjinder Singh Sirsa, Minister in the government of Delhi, who is joining me at this moment, because the whole idea is to try and also understand how the alarm bells are going and what the government is doing. Mr. Sirsa, thank you so much for speaking to NDTV. I'm coming to you live, sir, from the Yamuna Bazaar area. And this entire area is inundated, like completely underwater. Can I ask my camera person Ritvik just to turn around so that Mr. Sirsa can also see it? This gentleman is going. कितनी सीढ़ी नीचे और है सर? 8 सीढ़ी और है. मतलब पूरा एक नीचे मंजिल है जहाँ पे लोगों के घर हैं. So that gives you the amount of water which has come in. Look at this gentleman who is going down, just to give you a sense of how deep it is, how dangerous it is at this moment. Sirsa Saab, people are suffering here. I mean, from reporting from the Yamuna Bazaar area. Let me understand from you, sir, what's the assessment of the government at this moment, and what is the government doing about the situation which is prevailing in the national capital? Yeah, अभी तक तो till right now when we are talking, things are under control. The only area which eyes are concerned is the people who have made their houses at the Yamuna itself, which is called ozone in Delhi. So the unauthorized areas which close to the ozone, they are in a problem. But as of now, when we are speaking, things are under control. And as the Honorable Chief Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Haryana last night, late night, and he has also ensured that they will see that the extra water should not be flowed towards Delhi. So we are hoping that things will come under control in another 24 hours. But yes, we are still in a safe zone. Sir, while you say the situation is under control, but यहाँ का जो इधर का इलाका है यमुना बाजार वाला, ये पूरा इलाके में ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है. मतलब लोगों को पूरा घर खाली करा लिया गया है. मैंने देखा किस तरीके से लोगों की एक पूरी मंजिलें जो हैं नीचे की, वो तले जो पूरे डूबे हुए हैं. इनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जैसे मैं बोल कि जो लोग यमुना के ओजोन के अंदर जाके जिन्होंने बना रखा है, उन्हीं के लिए प्रॉब्लम आई है. यमुना का जो प्रभाव है ऑब्वियसली अपने एरिया में तो उनका रहेगा यमुना जी का, लेकिन उनको इवैक्यूएट वहां से कर दिया गया था 2 दिन पहले से ही. ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यस घरों में पानी भी गया है. उन घरों में गया है जो यमुना जी के तट के अंदर आगे चले जा चुके हैं, जिसको ओजोन कहा जाता है, जिन्होंने ओजोन बाउंड्रीज को पार किया है. अदरवाइज जो लो लाइन एरिया है जहां पे अक्सर यमुना जी का पानी जाता है, अभी तक वो एरिया सेफ है, बचा हुआ है. अगर इतना क्यूसिक पानी भी रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा. अगर भगवान ना करे कि पीछे से तेजी से और बारिश आए
ऐसा हम कामना करते हैं। तो जो अब की करंट सिचुएशन, अगर इतना पानी क्यूसिक 3.5 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है, अगर ये आता भी रहेगा तो कंट्रोल में चीजें रह सकती हैं। Thank you so much, Mr. Sirsa, for joining us at this moment. We are hoping that the government is well prepared because this situation is tense. And if you say that these are the areas where people should not have been, what other arrangements have been made as far as these people are concerned, that remains a big question, for the people of Delhi. As I see some more people being rescued there by the NDRF teams, which are coming in, continuously going in the low-lying areas and bringing out people. But while the situation in the national capital continues to be, what it is, alarming to say the least. It is expected that in the next couple of hours, if it rains, it will breach the 208 meter mark, the river Yamuna. And I showed you how dangerous where we were standing the situation was. The river is in full spate. But shifting focus from Delhi to Punjab in the plains, there as well, the situation is quite grim. Hundreds of villages of Punjab at this moment are reeling under severe flooding, which has been induced by the monsoons, and many places at this moment are completely inundated. Thousands of hectares of land in Punjab, agriculture land, has completely been submerged, causing a lot of distress to the people and to the state as well. My colleague Reet has been traveling through the day across the hinterland in Punjab to try and get a sense of what is the pace of the rescue operations and how people at this moment are facing the brunt of the situation in Punjab and what the government is doing. Reet joins me from Ajnala at this moment. Reet, thanks. And you've been sending some, ground reports which hopefully should help the government ensure that rescue and relief reaches people as soon as possible. Just give our viewers a sense of the kind of devastation that you've seen around because of these floods. Right, absolutely, Ankit. You very rightly mentioned that there are several villages in Punjab that are absolutely inundated. And like you mentioned, I'm in Ajnala right now. This is, of course, a city which is very near Amritsar. It's not very far away from the Amritsar airport. I'll just ask my camera person to pan and show you around. As you can see that several fields in this village are completely and severely inundated. There's knee-deep water as we speak, that even I'm navigating through. There is a Gurudwara here that is taking care of all the rescue and relief operations. Well, you spoke about rescue and relief operations. I spoke to an Aam Aadmi Party leader earlier, and he in fact even admitted on camera about how his party has had lapses when it comes to grappling with floods in Punjab. Now, I mentioned this rescue center. Now, this is in fact, this Gurudwara in Ajnala has become a very important, in some ways, a center in which all the rescue and relief materials are stored. And with that, I'll actually even take you through to, some of the volunteers over here. There are people from different faiths that have in fact come over here to sort of, join hands together for the cause of Ajnala, for the cause of Punjab, which of course remains inundated by floods like you mentioned. I'm going to cut across to, somebody from Khalsa who's joining me right now. How exactly are the rescue operations taking place? You mentioned earlier to me that, you're storing a lot of rescue and relief materials over here. What all is being stored? So basically, we are getting a lot of donations from all over Punjab and all over India so far. Apart from the monetary funds, we are also getting a lot of required material. It includes all the kind of groceries, medical supplies, food for the cattle, as well as there's a different kind of mosquito nets and the mosquito repellent, like Odomos and different kind of those things. So we are right now trying to store everything, because the reason being is there's so much of enough supplies that has been donated, not just to Khalsa, but to different other organizations, as well as different other subgroups are getting into it. Small groups from different villages are coming in. So there is it's really happy to see all of the people coming together to help Punjab in such a right, exactly. In fact, Ankit, of course, as we all know, Seva in fact is the spirit of Punjab, and like he mentioned that there's in fact surplus rescue and relief materials that's coming in from different sides, so much so that in fact distribution is becoming a problem because several areas are getting too much of it and several too little. Back to you.
That's what possibly the government will have to prioritize so that there is equal distribution as far as this relief material is concerned. But at this moment, a lot of people, especially celebrities, actors, are coming out appealing for people to help in the flood-affected areas. I'm right now being joined by one such conscientious actor, Randeep Hooda, is joining me at this moment. Randeep, thank you so much for speaking to NDTV. While we are reporting from all across the country here on the network about the difficult times that people are facing, whether it's Punjab, Himachal Pradesh, some areas in the national capital as well, can I understand from you, how are you viewing this situation, and what would be your contribution and appeal as far as the people, those who are reeling under these conditions, are concerned? Well, these are terrible times. This is, I guess, what climate change is supposed to be, and it affects the poorest of the poor more than anybody else. I've been here in Punjab for the last 2 days working with Global Sikhs. I've been, associated with Amarpreet Singh for the last 10 years, and I've never seen such devastation. The sheer size of the affected area is huge. As another person on your show said, that there is a lot of help that has come in. Right now, it is more about doing ground assessment, and there is rescue relief, and then there is rehabilitation. So there is a lot of help that has come in, but now it's the time to do ground assessment and prioritize and meritorize the kind of help needed. Like places where the waters receded is a different kind of help. Like Global Six, with whom I'm working here now in Punjab, the places where the water has gone down. So today we started distribution of buffaloes who've just given birth and are giving milk, so that people who have lost a lot of cattle and a sense of livelihood and nutrition, those things are going. We went to places where there was no electricity, right. So they have enough ration and food that has reached there, but there is no electricity. So to read the ground situation and supply solar lights there. So that is what is needed right now, a sense of assessing the situation and giving help accordingly on the ground. Absolutely. Mr. Hooda, really appreciate what you are doing yourself as well. Being in Punjab, reaching out to people. Also, when you say things, of course, it makes a big difference. Can I also get a sense from you where you are, and if you could show our viewers around the actual situation, where you are coming to us live from at this moment. And like you said, specifics are needed for specific areas so that people can cope with this situation. Yeah, right now I've had to come away for network from where we were working in Gurdaspur area, Gurdaspur rural area towards the border, Ramdas and all those things, all those places. I've had to come out from there so that I could join your channel, because there was no network there. Network is again another big problem. There's a lot of devastation that has happened. A lot of houses have got cracks. The furniture's all gone. The animals have gone. They've flown away with the flood water. There is a lot of slush. There is just a sense of despair. People are reaching villages, but there are a lot of houses which are in the fields, which are away from the villages, which are harder to reach. Global Six has about 8 motorboats going, where they're continuing with the relief and rescue, and there is cleaning that has started of the slush. In my opinion, the immediate relief work is, because there's so much attention to it, is on top of is going well, but it is once the waters have receded, to rehabilitate people into their lives who do not have the money or the means to bounce back to where they were, if not more. That is going to be the biggest challenge. Yes. And of course, the diseases that come after the flood, which will have to be taken. So it's not about just doing it for these few days. It is going to take months for the people to bounce back, because they've lost everything.
it will take a sustained effort, not just from the government, but people like you, Mr. Huda, and I'm grateful that what you are doing and your voice does reach out to millions others. So please see help in whatever way you can. Thank you so much, Mr. Huda, for joining us at this We moment need here more on help in NDTV. kind than Let me money. very quickly at this moment. Go ahead, sir. Go ahead. There is a lot of help needed in kind instead of money. So go to the websites of all these organizations that are working. Look at their requirements. I can only say it about Yes. Global with whom I'm working. Look at the immediate requirements, and if you can supply in kind more than just finances, that'll be much more helpful, because then one has Yes. to go and source them Yes. and then get them here. It will take time. So if you can supply in kind in whatever requirements that are put True. out there, that'll be more helpful. Absolutely. So don't think that writing a check is enough. Make that effort, send the material which is required. That is how people would be able to get actual help. Randeep, thank you so much for speaking to us. Let me very quickly at this moment go across to Lalchand Kautushak. He's the Minister of Food and Civil Supplies and Consumer Affairs, Forest and Wildlife of Punjab. मिनिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अभी रणदीप हुड्डा हमारे साथ थे, बता रहे थे गुरदासपुर के इलाके में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. क्या हालात हैं सर, अभी आप कहां पर हैं और क्या सरकार कर रही है लोगों के जो नुकसान हुआ है उसके लिए? थैंक यू सभी को मेरी ओर से सत श्री अकाल. अभी हम लोग जो पठानकोट का इलाका है, रावी के किनारे खड़े हैं. बेसिकली ये रावी जो दरिया है हमारा, रावी और पाकिस्तान का हमारा जो बॉर्डर है, इसके दरमियान 80 गांव हैं जो 90% अफेक्टेड हुए हैं जो रावी के पानी के फ्लड आने की वजह से. तो ये तो सभी जानते हैं कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश होने की वजह से हमारा जो पठानकोट के अंदर 3 डैम है वो ओवरफ्लो हुआ है. उसकी वजह से एक बड़ा सैलाब सा जो आया है पानी का, जिसने हमारी एक बहुत बड़ी दुस्सी है, बांध है एक अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर, जिसको डैमेज किया है. सो 3 पड़ाव थे इस जो फ्लड आया था, इसमें हमारे लिए चुनौती के रूप में. पहला तो ये था कि हम लोग रेस्क्यू करें, किसी की जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी. सो हम लोगों ने जहां रेस्क्यू किया, हमें हेलीकॉप्टर भी पंजाब सरकार ने प्रोवाइड किया, एनडीआरएफ भी टीमें में हमारे पास थी, तो वो हमने अच्छी तरह से किया. अभी हमारी राहत सामग्री चल रही है, जो गांव में जो अफेक्टेड एरिया है, वो जो लोग जिनके घरों का आटा, जिनके घरों का जो राशन है वो भीग चुका है, अभी वो खाने के लायक नहीं रहा है. तो एक तो वो राहत कार्य चल रहे हैं, सेकंड स्टेज हमारी. इसके साथ साथ जो हमारे पशुधन है, पशुधन के लिए फीड का सवाल है, तूड़ी का सवाल है, जहाँ हरा चारा जितना भी कहीं कहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग अभी स्टेबल हो गए हैं कि लोगों के पास राशन पहुंच गया है. पेशी है वो अभी. मिनिस्टर साहब, लेकिन ये आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर जगह पंजाब में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को जरूरत की जो सामान है वो मिल जाए? क्योंकि कई जगह पर देखा जा रहा है कि सामान काफी पहुंच रहा है और कुछ इलाकों में अभी भी थोड़ी कमी बताई जा रही है. तो कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब जगह पर लोगों की मदद हो सके? नहीं, मैं बेसिकली पठानकोट की बात कर रहा हूँ, जहाँ जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ. अदरवाइज तो अभी क्योंकि पठानकोट जो इलाका है, समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ. आमतौर पे लोग रावी को जानते हैं कि रावी एक दरिया है पठानकोट गुरदासपुर के अंदर. बेसिकली रावी के साथ साथ 5-6 शहमी जो रिवर है, दरिया है, जो जम्मू कश्मीर से प्रवेश करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में. तो वो एक्स्ट्रा पानी आता है और इस पानी की वजह से भी इस बार काफी नुकसान हुआ. पर क्योंकि पहली स्टेज में पठानकोट लपेट में आया था, धीरे धीरे हमारा केंद्र सरकार से कितनी मदद की आप लोगों को आवश्यकता है? सरकार को क्या लगता है कि कितना पैसा केंद्र सरकार को अभी देना चाहिए जिससे कि आप लोगों की मदद हो पाए? कितनी मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिल पा रही है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मदद मिली नहीं है. आज माननीय गवर्नर साहब भी इधर आए थे, उनसे भी हम लोगों ने डिमांड की है कि पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपदा का पैसा जे तो आप करें, जितनी पंजाब की भरपाई हो सकती है. पंजाब वही है जिसके युवा देश के मतलब सेनाओं के अंदर बड़ी भूमिका अदा करते हैं. पंजाब वही है हमारा, जहां मैं पठानकोट हूँ, ये वही इलाका जहां एयरबेस पे अटैक हुआ था, जहां दीनानगर अटैक हुआ था. अभी 5-6 महीने पहले जब पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जंग का माहौल था, तो हमारे गांव के गांव उठाकर हम लोग
उस रास्ते से जी। भी गुजरे हैं। तो आप कुदरत का क्या है। हम ये कहना चाहते हैं कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र को पंजाब की बाजू पकड़नी चाहिए, जो डैमेज हुआ है उसको भी भरपाई हो, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो पंजाब का फंडामेंटल राइट जी। है, जो हमारा 60,000 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं का जो केंद्र के पास Okay. पड़ा है, हमें तुरंत दिया जाए। हम उस पैसे से अपने लोगों को थोड़ा खड़े करने के लिए Right. ये काम करें, ये हमारी एक फर्स्ट डिमांड है। साथ ही साथ जो डैमेज हुआ है, क्योंकि अभी मोटा ठीक मोटा है, सर। आंकलन किया जा रहा है, अभी आकलन करने के लिए थोड़ा समय भी लगेगा, तो वो भी जो जल्दी उसमें से कितनी रिलीफ बिल्कुल, बिल्कुल। उसको तुरंत रिलीफ पंजाब को देनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त यू आर इन द फील्ड एट दिस मोमेंट, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस अ सेंस ऑफ what the relief work which is taking place in Punjab. Thank you so much. I want to very quickly, before I go to my colleague Gurpreet, let me very quickly show you also, on one hand, while there is the focus to rescue the people, those who are here, there are some, people, those who have come with ambulances to rescue the dogs and other, the animals here as well. When I was coming in, I saw a lot of people taking their, cows and other cattle away from this place. They are trying to take the dogs and all of them to safer places. But very quickly, let me go across to Gurpreet, my colleague, who has also been reporting continuously. Can I? Okay, I will. Can I just hear that again? All right. Before I go to Gurpreet, as I've told you, ladies and gentlemen, the situation in Himachal Pradesh is also very precarious. Joining me at this moment is the Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhwinder Singh Sukhu. Sir, thank you so much for joining us at this moment. हिमाचल प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं सर, साल दर साल इतनी मुश्किल आती है मॉनसून के साथ। अभी हालात क्या हैं और सरकार अभी किस स्तर पर काम कर रही है लोगों को मदद पहुंचाने के लिए? देखिए, 2023 से ज्यादा भयंकर आपदा इस प्रदेश में अब आई। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और मैं ये कह सकता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश इस चुनौती का सामना कर रहा है, और निश्चित रूप से भविष्य में और जो स्टेट्स हैं वो भी इसका सामना करेंगे। मैं पिछले दिनों गृह मंत्री जी से भी मिला, और गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने हमारे अनुरोध पर एक टीम जो है वो गठित की है, उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर सही पिक्चर का पता लगेगा। पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, और पिछले 3 दिनों में ही तकरीबन 15 के करीब मौतें हो चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अभी मणि महेश यात्रा पर हमारे श्रद्धालु गए हुए थे, 15,000 श्रद्धालुओं को हम निकाल चुके हैं। 700 श्रद्धालु अभी भी हमारे मणि महेश में फंसे पड़े हैं, क्योंकि वो श्रद्धालु है जो चल ज़्यादा नहीं सकते हैं, उनको एयर इवैक्यूएट करना है। हमने एयरफोर्स से बात की है कि कल हमें विंडो मिल रहा है, कल हमें लगता है कि कल धूप खिलेगी, तो कल उनको आप हमें 4 या 5 हेलीकॉप्टर जो Mi-17 है हमें रेस्क्यू के लिए दीजिए, ताकि हमें युद्ध स्तर पर 700 पर्यटकों को हम निकाल सके। 4 की करीब डेथ बॉडी अभी हमारी एक कुकती जगह है वहां पड़ी है, उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने बड़ी मुश्किल से, जब मौसम खुला, तो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर Mi-17 से 4 डेड बॉडीज को आज हमने पठानकोट पहुंचाया है। पूरे प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, और निश्चित तौर पर इस बार की जो आपदा अभी जो आई है पिछले 10-15 दिनों में, उसने बहुत नुकसान हिमाचल के पहुंचाया है। तकरीबन सभी सड़कों को नुकसान पहुंचा है। पंचायत सर जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि 2023 में भी जब मंडी, कुल्लू और मनाली में जब फ्लड्स आए थे, मैं तब भी वहां पर आया था, और तब आपसे मेरी मुलाकात भी बुनतर के आसपास हुई थी। तब हम बात कर रहे थे, और आपने कहा था कि ये सड़कें जो हैं वो बह गई हैं, 4 लेन जो बन रहे थे मनाली का वो भी बह गए हैं। उन्हीं सेम इलाकों में इस बार फिर से दिखाई पड़ रहा है कि वहीं उन्हें रायसेन हो या वहां पर पूरा सड़क फिर से बह गई हैं। घूम फिर के सवाल यही आता है कि किस तरीके का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या ये नेशनल हाईवेज इतने ज़रूरी हैं, और कि अगर वो हैं
हैं तो क्या उसके कारण पहाड़ों पर ये फर्क पड़ रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरीके का नुकसान हो रहा है? देखिए, कुल्लू मनाली जब आप पिछली बार आए थे तो उसका कम नुकसान हुआ था, इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बार हमारे जो क्लाउड बर्स्ट है वो कम से कम 56 के करीब हो गए। लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, लाहौल स्पीति लेह की तरह है, वहां बारिश हुई है, क्लाउड बर्स्टिंग हुई है। जो कुल्लू का NHI का जो रोड है वो अभी पूरी तरह बह चुका है। तो उस दृष्टि से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरी राज्य को ही हमने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पूरी स्टेट हमारा डिजास्टर प्रूफ एरिया डिक्लेयर हमने कर दिया है। और अभी पता लगा लाहौल स्पीति तो कुल्लू मनाली इसलिए फेमस है क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। चंबा हमारा सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ है इस बार के आपदा में, और उसके बाद मंडी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अभी हमीरपुर में जमीन धस गई है, वहां नुकसान हुआ है। उन्ना में बहुत अधिक पानी भर के आया है। मंड क्षेत्र है हमारा, इंदौरा और फतेहपुर नूरपुर में, इसमें बहुत नुकसान हुआ। यहीं से जो पानी पंजाब जा रहा है तो पंजाब को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो ये सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इस चीज के लिए एक आर्थिक तौर पर कितना बड़ा झटका है ये हिमाचल प्रदेश के लिए, और कितनी मदद आपको केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है? कितनी आपने मांगी है, कितनी मिल रही है? अभी देखिए तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ के नुकसान का तो अभी इनिशियल एस्टीमेट है। अभी जब रिपोर्ट्स आएगी, पूरे रास्ते खुलेंगे, कम्युनिकेशन बंद है। चंबा का एक भरमौर इलाका है, वहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। BSNL लगा है, जियो लगा है, सब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने लगे हैं। 2-2 किलोमीटर सड़क बिल्कुल बह के रावी में समा चुकी है। हम श्रद्धालुओं को निकालने में हम चिंतित हैं। पहले उनको घर पहुंचाएं, उनके परिवारों के पास पहुंचाएं। कम्युनिकेशन उनका हो नहीं रहा। हमारा एक मिनिस्टर पिछले 6 दिन से भरमौर में वहीं है, वो सब राहत कार्य को देख रहे हैं। जो हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी है, वो वहां 6 दिन से है। वो पैदल चलकर 56 किलोमीटर वहां हम पहुंचे हैं। मैं खुद चंबा जिला में गया। तो अभी मेरे तो ये है कि मेरा दायित्व तो ये है और मेरा कर्तव्य भी है कि पहले जो श्रद्धालु हमारे मेहमान जो आए हैं, किसी तरह हमको 5 या 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हमको मिल जाएंगे तो 15-20 लोग उसमें लाकर हम 10-12 सॉर्टिज करने के बाद उनको पहले एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। उसके बाद इन सड़कों को खोलने का कार्य का पता लगेगा। कितना परिवार हमारे घर उजड़ गए। जी सीएम साहब, मैं बस आपसे अंत में ये पूछना चाहूंगा, अब घूम फिर के बात वहीं पर आती है, क्लाइमेट चेंज का एक असर है, और दूसरा जो बात होती है कि ओवर टूरिज्म हो रहा है पहाड़ों में, चाहे वो हिमाचल के हों चाहे उत्तराखंड के हों। बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए आएँ, और उसका एक काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। आपको लगता है सर कहीं ना कहीं अब बैलेंस बनाने की आवश्यकता है? सिर्फ कमर्शलाइजेशन ओवर टूरिज्म की तरफ से शायद थोड़ा सा एक कदम पीछे हटाने की आवश्यकता है? देखिए, इस समय तो बरसात में, जुलाई अगस्त में तो टूरिज्म ही बहुत कम होता है। हमारा जो टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है वो मई और जून का होता है। इस समय टूरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का फर्क है। 1 या 1.5 डिग्री ये टेम्परेचर बढ़ा है। पिछले 49 सालों में कभी इतनी ज्यादा बारिश पिछले 3 दिन में नहीं हुई जो अब हुई है। तो ये चीजों को अभी समझने की जरूरत है। ये इसका साइंटिफिक हल ढूंढने की जरूरत है। और जो क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट हमें नहीं डाल रहा है, हमारे साथ लगती जो हिमालय रेंजेस है उसमें डाल रहा है। अब चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे उत्तराखंड है, तो ये एक समझने की जरूरत है कि पानी इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बस्टिंग हो रही है। जब गर्म हवाओं के साथ ठंडी हवाओं में दबाव पड़ता तो उस जगह क्लाउड बस्टिंग हो जाती है। और ये कोई हिल टॉप पर नहीं हो रही है, ये क्लाउड बस्टिंग कई जगह सेंटर में हो रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, अभी नुकसान का आंकड़ा लगाए तो हमारा टूरिस्ट से जो हमको रेवेन्यू GST के माध्यम से आना था वो नहीं मिल रहा है। हमारे जो बिजली के प्रोजेक्ट जो हमें रेवेन्यू देते थे, चाहे प्राइवेट थे चाहे NTPC थे, वो सब बंद पड़े हैं। एक क्षेत्र तो हमारा भी बिजली से इसलिए बंद पड़ा है, एक हमारा शिमला का क्षेत्र, कि वहाँ बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हो गया। वहाँ तो कटिंग नहीं हुई थी, लेकिन लगातार बारिश से मिट्टी गीली हो जाती है और दबाव पड़ जाता है मिट्टी पर, तो सारे मिट्टी के साथ पत्थर को भाग के लाते हैं और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है। सर
जी, उम्मीद यही होगी कि कम से कम थोड़ा बारिश से राहत मिले और उसके बाद अगर बारिश रुकती है तो आपके लिए भी और आपकी सरकार के लिए भी लोगों तक मदद पहुंचाने में और आसानी होगी। मुश्किल समय है हिमाचल प्रदेश के लिए। थैंक यू सो मच चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुक्खू फॉर स्पीकिंग टू अस एट दिस मोमेंट। आवर बेस्ट विशेस विद योर एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्राई एंड रीच द लास्ट person who has been affected by this. Thank you so much for taking the time out for NDTV. But what is just to give you a visual reference of how bad the situation is on the ground, take a look at this report filed by my colleague Ravish. ये मनाली की मशहूर कैंपिंग साइट है और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम बर्तन और बहुत सारा जो सामान है वो लास्ट मिनट पर निकाला गया है। और वो क्यों निकाला गया है? वो इसलिए निकाला गया क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग होती थी और ब्यास नदी के किनारे देश विदेश की जो सैलानी हैं वो यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आते थे। संभल के आना सुनी। नीचे की तस्वीर दिखाता हूँ, वो और ज़्यादा भयावह है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्यास नदी का पानी यहाँ तक आएगा। अब आप देखिए, पानी की रफ्तार देखिए और 25 तारीख को जिस तरीके से ब्यास नदी आई थी, बहाव उसका बहुत तेज़ था। हालांकि उतना तो जलस्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी भी तमाम बहाव जो है वो ब्यास नदी का इसी तरीके से, ये देखिए गद्दे और ये आप देखिए यहाँ पर टूरिस्ट रुकते थे। आज यहाँ पर ब्यास नदी दहाड़ मार रही है। बहाव देखिए इसका कितना तेज है और पूरी तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को ज़मींदोज़ कर दिया है, नीचे से काट रही है। आगे आइए, ये घर जो है, ये कैंपिंग जो साइट है, होटल है, इसको कल ब्यास नदी में जब पानी बढ़ा तो ये कल ये पूरा जो होटल है, होटल का एक हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ढह गया है। थोड़ा सा आगे आओ तो ये तबाही का जो मंजर है वो हर तरफ फैला हुआ है। ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया है इस पूरे कैंपिंग साइट को। यहाँ पर लोग जो है वो बैठते थे, कैंपिंग करते थे ब्यास नदी के किनारे। आज आप इसका फ्लो देखिए। Trying times for the country all across, whether it's the hills or the plains or even in the national capital where I am at this moment reporting from. We just saw the police, in fact, asking the last of the residents here to evacuate because the expectation is that in the next hour or two, the level of the Yamuna is going to rise. Where I'm standing, I can see the Yamuna River is just about 50 meters from where I'm standing, and this entire area, it could in fact breach this wall as well. And once that happens, the trouble for these low-lying areas is only going to compound. We have much more lined up for this phenomena which we are seeing across the country. We'll get you more ground reports and eyewitness accounts. That's the police van again, in fact, trying to tell people to move from this place. Announcements being made continuously. I'm coming back from the flood-affected areas of the national capital, the low-lying areas here in the Yamuna Bazar in just a short while. Stay tuned. All right, at this moment, administration here in the national capital telling people to, in fact, move away from this area because the water level is expected to increase. But let me go across very patiently. My colleague Gurpreet has been waiting in Punjab. He is in Firozpur area of Punjab, which is also reeling under severe flood. Gurpreet, over to you. Just give our viewers a sense of, what is happening where you are.
Right now we are in Firozpur and we are next to Satluj river where we are showing all the pictures from ground what is happening at this point of time. We can see the water level is already increasing here and we are showing the spirit of Punjabis. Now these Punjabis, they have decided from district Firozpur, they have decided to mount a wall against this river so that this river should not be overcrossed and the whole district of Firozpur as well as other area, they should not be submerged with this water the way we have seen the scenes in district Gurdaspur, district Amritsar also. But these people, they have come in tractors and trolleys, they have brought in sacks filled with sands and they are putting all these sacks and sands to mount a wall against this water level so that they will be able to divert this water towards another way. But they are trying to save the city as well as the villages which are nearby. And I'll request my video to show all these pictures from ground. We can see the tractors and trolleys in a large number. They have been parked here. They have brought sand and sacks and they are filling sand in the sacks to just mount a temporary wall in this river so that they will be able to save this river. Water should not flow and that should not be enter into the villages. So what we have seen, the spirit of Punjabi, we are showing that how they have brought sand and sack to just save their areas, because in district Amritsar and in district Gurdaspur we have seen the whole area had been flooded because we have seen a portion of some of the canals that had already been washed away, and that could be possible reasons why that whole area had been flooded there. Back to studio. Right, thank you, Gurpreet, for getting us the ground reports continuously from Punjab. Also, the state which is reeling under massive stress because of the monsoon-induced floods. I'm taking a quick break. When we come back, I'll give you again a sense of where the water here in Jamuna is. Stay tuned. We are coming back. So, if it rains, the problem would be that the river is going to break the embankment as well. Wherever it is, it will go over this wall and then to all the places where the rescue shelters have been made. So it will then provide or create another problem as far as the people here in the low-lying areas are concerned. Some, NGOs, dog catchers, trying to also rescue the animals here. आपका बता रहे थे सर, ये वाला घर आपका है? ये नीला वाला जो है? हाँ. तो ये कितना मंजिल इसके नीचे आपका अभी दबा हुआ है? पानी में क्या है? कम से कम 10 फीट पानी है यहाँ पे नीचे. 10 फीट पानी. 10 फीट. और ऐसा लग रहा है कि पानी और बढ़ेगा अभी? पानी बढ़ेगा. बाहर आने के लिए कह रहे हैं लोग कि बाहर पानी आ सकता है. हाँ. तो पानी तो बढ़ेगा. दीवार को क्रॉस कर सकता है. लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं लोगों को निकलने के लिए. आप लोग सब परिवार, आपका सारे परिवार बाहर जा. आप लोग जो कैचिंग द डॉग्स है, आप लोग कुत्तों को रेस्क्यू करने आए हुए हैं? जी जी, माँ के आंचल से हम लोग. और यहाँ पे मतलब हम 4 दिन हो गए, हमारे को 4था दिन है. 4 दिन से बहुत सारे बच्चे हमने यहाँ से रेस्क्यू करे हैं और रेगुलर कर ही रहे हैं. अभी भी हमारी गाड़ियाँ गई हैं और अब दोबारा भी गाड़ी आएंगे अभी और रेस्क्यू. रोज पानी का लेवल बढ़ रहा है यहाँ पे? पानी का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. कल हमने देखा था तो यहाँ पे मतलब 7-8 सीढ़ियाँ दिख भी रही थी और आज तो अलग ही है. like these people will tell where he is standing. आप जहाँ खड़े हुए हो उसके नीचे और कितनी सीढ़ियाँ हैं? इसके नीचे 8 या 9 और हैं शायद. टोटल 12 सीढ़ियाँ और हैं. You will see those people, in fact, trying to go, and there were some dogs right at the end where we had started walking from right on the, close to the river Yamuna, and we are walking on the terraces, on the roofs of all these houses at this moment. There is also danger of snakes and other creatures, in fact, here as well. People have to evacuate and reach safety. We are hoping that the rain gods show some mercy here on the low-lying areas of Delhi. That's all the time that I have in this special edition of Nationwide at 6, coming to you live from the national capital, the worst flood-affected areas here in the national capital. I'm Ankit Tyagi with my colleague Ritvik signing off.